सूरत के पांडेसरा में पत्नी की हत्या करने वाला पति पकड़ा गया। 6 जनवरी को सूरत के पांडेसरा इलाके में कर्मयोगी सोसाइटी के घर में 35 वर्षीय लक्ष्मीबेन कृष्णा स्वाई का क्षत विक्षत शव मिला था। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में महिला के पति कृष्णा स्वाई को ओडिशा राज्य से गिरफ्तार कर लिया गया है। पत्नी की हत्या इस शक में की गई थी कि उसका किसी दूसरे धर्म के शख्स से अफेयर है। हालांकि पति पत्नी पहले भी हत्या के एक मामले में जेल जा चुके हैं। कर्मयोगी सोसाइटी के प्लॉट नंबर 457-58 में एक घर में तेज दुर्गंध आ रही थी, जिससे आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इस असहनीय स्थिति के कारण निवासियों ने पांडेसरा पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और घर का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई। अंदर बिस्तर पर लक्ष्मीबेन का क्षत विक्षत शव मिला। पुलिस निरीक्षक HM गढ़वी ने कहा कि लक्ष्मीबेन और पति कृष्णा स्वाई मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं। यह दंपति पहले भी एक हत्या के मामले में शामिल था। 2019 में दोनों को लक्ष्मीबेन के भाई की पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि लक्ष्मीबेन को मामले में बरी कर दिया गया था, जबकि कृष्णा को जेल की सजा सुनाई गई थी। कुछ ही दिन पहले कृष्णा जमानत पर जेल से छूटा था। जेल से छूटने के बाद उन्हें शक हुआ कि लक्ष्मीबेन का किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ अफेयर है। इस शक में पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब हो गए और लगातार झगड़े होने लगे। इस झगड़ों के अंत में क्रोधित कृष्णा ने लक्ष्मीबेन की हत्या कर दी और घर पर ताला लगाकर भाग गए। तकनीकी निगरानी और सूचना के आधार पर पुलिस ने कृष्णा स्वाई को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। आरोपी को अब सूरत लाया गया है और कानूनी कार्यवाही की जा रही है। आप देख रहे हो गुजरात इंडिया न्यूज सपना राजपूत के साथ। जी, गई तारीख 6 જાન્યુઆરી 2025 ના રોજ આવિર્ભાવ સોસાયટીમાં એક ડેડ બોડી મળેલ, જે ડેડ બોડીની ઓળખ થતા તેના સગાવાલાને બોલાવવામાં આવેલ અને જેમાં ડેડ બોડીની ઓળખ થતા તેમના માતૃશ્રીની ફરિયાદ લેવામાં આવેલ અને ફરિયાદ આધારે આરોપીની તજવીજ તપાસ કરવામાં આવેલ, જેમાં આરોપી તેના પતિ શ્રી કૃષ્ણ સ્વાઈ નાઓ નીકળેલા અને તેમને ઓરિસ્સા ખાતેથી વોચ કરી સર્વેલન્સ દ્વારા પીછો કરી ત્યાં डिटेन કરવામાં આવેલા હતા અને આજ રોજ એટલે કે પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે સુરત શહેર ખાતે લાવી તેમની ધોરણસરની અટક કરવામાં આવેલ છે। બનાવની વિગત એવી છે કે આરોપીએ પોતાની પત્ની પર ચારિત્ર્યની શંકા રાખી અને મૃત્યુ નિપજાવેલ છે। આરોપી અને મરણ જનાર બંનેના વિરુદ્ધ પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશનમાં 2017માં મર્ડરનો ગુનો દાખલ થયેલ છે। જે મર્ડર બંને જણાએ મળીને એટલે કે પત્નીના ભાઈની પત્નીનું શાળાની પત્નીનું મર્ડર કરેલું હતું, જેનું કારણ પ્રોપર્ટીનો વિખવાદ હતો અને ત્યારબાદ બંને જેલમાં હતા। પ્રથમ મહિલા છૂટેલી હતી અને ગઈ તારીખ 23/12/2024 ના રોજ આ કૃષ્ણા સ્વાઈ છૂટેલ અને આવીને તેની પત્ની બદચલન હોવાનું તેને જણાતા તેણે પત્નીને પોતાની રૂમમાં જ હત્યા કરેલા ગઈકાલે કબૂલેલ છે। મારવામાં તેણે દિવાલ સાથે તેને પટકી હતી તથા કુકરનો ઉપયોગ કરેલ છે અને રસોડાના વાસણનો પણ તેણે ઉપયોગ કરેલ છે।